जैसा कि हमारे गुरु ने बोला था, धवलीकर साहब, आज उनकी मेमोरी में हम ये प्रोग्राम्स करने वाले हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमें बहुत अच्छे आज एक स्पीकर मिले हैं। तो ये शुरुआत करने से पहले मैं सभी को वेलकम करूंगा। आई एम ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल एसोसिएशन ऑफ वेटिंग रूम एंड अदर एसोसिएशन सपोर्टिंग मेंबर, सभी की तरफ से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। लास्ट ईयर भी हमने डिजिटल वेबिनार करे थे, इस बार भी हम दूसरे वाले से हैं। मैं उसमें शकन वैद जी ने 2 जगह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, सबसे पहले एक मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सभी लोग अपने माइक बंद कर लें सबसे पहले, कि किसी कारण बीच में बहुत सारी आवाजें आएंगी, तो सहयोग करें इस बारे में। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर सभी का स्वागत करता हूँ और इस वेबिनार की संध्या पे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि हम अपने गुरु श्री डीजी धवलीकर साहब को याद करते हैं। आज उनकी बेसिकली जन्म तिथि होती है और जन्म तिथि के दिन हम केवल उनको एक अर्पण करने के लिए, हमारे पास और कुछ नहीं होता, बट हाँ, हम अपने किए हुए कर्मों को यदि देखें या हमने बहुत अच्छे इवेंट करे हैं या हमारे हिंदुस्तान के अंदर या बाहर भी ऐसे स्पीकर आए हैं जिन्होंने अपने अच्छे लेक्चर के थ्रू इनको श्रद्धांजलि दी है। तो पुनः आपका स्वागत है। और मैं इस बेला में जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे उसमें एक सरस्वती वंदना से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। वेलकम एड्रेस चेयरमैन द्वारा होगा और एसी के बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया जाएगा और लाइफ स्केच ऑफ द डीजी धवलीकर साहब के बारे में भी बात होगी। इसके बाद हमारा मेमोरियल जो लेक्चर होगा वो डॉक्टर अभय गुप्ता द्वारा प्रेजेंट करा जाएगा और बाद में कंक्लूडिंग सेशन होगा और आपके क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे उन्हें अपने इस में राइट अप पे आप देते जाएंगे। हाँ, तो हम उसको एक बार सॉर्ट आउट करेंगे और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली उनका आंसर देने की कोशिश करी जाएगी। बहुत कम वक्त होगा बट उस वक्त को जैसे भी यूटिलाइज करेंगे और आप बाद में ईमेल भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आंसर आपको बाद में भी अभय गुप्ता द्वारा दिए जाएंगे। तो मैं अब यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम करने से पहले हम चाहते हैं कि एक सरस्वती वंदना से ही हम आगे बढ़ें। हम ऐसी देवी को हमेशा नमन करते हैं जिन्होंने हमें ये विद्यारूपी धन हमेशा प्रदान करा हुआ है। भव्यता हमें सदैव आकर्षित करती है और शायद इसलिए ये हमारे अहंकार के लिए भी आईना बन जाती है। हमें उस परम सत्ता की याद दिलाती है जिसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। दिव्य प्रेरणा से भव्य प्रतिमा और भव्य प्रतिमा में दिव्य के दर्शन होते हैं। ऐसा ही एक सेमिनार हम वेबिनार करने जा रहे हैं। इस बारे में मैं ये प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर इंदौर के चेयरमैन श्री एच.आई. मेहता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द यहाँ पर अपने प्रदान करें। एच.आई. मेहता साहब। एच.आई. मेहता साहब अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, इधर नहीं है। ये इस पे क्यों नहीं आ रही है? वो फोटो तो आएगा, आवाज नहीं आ रही है। फोटो बंद
आई आई थिंक मेहता साहब कहीं डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं उनके कुछ शब्द जो हैं हम बाद में भी सुनेंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि माई सेल्फ DS परिहार, सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर, पुनः आपका मैं स्वागत करता हूँ और इस फोरम में जितने भी लोग पधारे हैं या आने वाले हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। अबाउट द ASC, हम शॉर्ट में इसे ASC बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर। ये 1992 में DG धवलीकर साहब और JP गुप्ता द्वारा स्थापित करा गया था और इसका जो उद्देश्य था कि यहाँ पर जो लोगों के बीच में है कि टेक्निकल नॉलेज का अपग्रेडेशन, ये GSITS के एक फोरम पे स्टार्ट करा गया था जिसमें काफी प्रोफेसर थे, इस शहर के वरिष्ठ इंजीनियर थे और काफी जूनियर इंजीनियरों ने मिलके इस फोरम को स्टार्ट करा। इसके बारे में यूं बताना चाहूंगा कि जो मेंबर्स हैं वो बड़े डेडिकेटेड हैं और इस शहर में बहुत सारी चीजें जो डेवलप हुई हैं उसमें धवलीकर साहब के गाइडेंस में जो रोड्स के कंस्ट्रक्शन हुए हैं, बाईपास हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, इसमें काफी कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट था और उन्हीं के गाइडलाइन पे वो जो फोरम था पूरे नेशनल लेवल पे अडॉप्ट करा गया जो टैक्सेशन का था कि टैक्सेशन कैसे फिक्स करा जाए पूरी कंट्री में। वो मॉडल इंदौर का सभी जगह याद करा जाता है आज भी। हमारा ये जो एसोसिएशन का कार्य है वो केवल स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं है, हमेशा सोशल इंजीनियरिंग के वक्त जैसे दूसरी भी संभावनाओं को हमेशा तलाशा जाता है कि हम कैसे जाकर और ऐसे शहर के जो उत्थान के लिए कार्य हों उनमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा सहयोग प्रदान करें और ऐसा हम करते भी रहते हैं। आने वाले टाइम में जो शहर के विकास के लिए और भी चीजें हैं वहां भी हमारे लोग जाते हैं और जितने भी एसोसिएशन हैं उनके साथ में मिल के ये कार्य करा जाता है, कोई एक जैसा कार्य नहीं करा जाता। यहाँ पर 1992 में स्थापना हुई थी, आज हम 2021 में हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं पूरी कंट्री वाइड में सब जगह अपने अपने कार्य कर रहे हैं। आज का भी जो एक लेक्चर होगा वो भी हमारे ही एसोसिएशन के सीनियर मेंबर द्वारा प्रदान करा जाएगा जो कि एक इंटरनेशनल फेम में वर्क करते हैं। मेमोरियल लेक्चर जो की स्थापना जब करी गई तो जब धवलीकर साहब के बाद में इसको हमने जिस दिन वो यहाँ से देवशान हुआ उसके बाद में 2002 से हमने इसे स्टार्ट करा। स्टार्ट में बात ये थी हाँ कि उनके दिए हुए जो ज्ञान था और जो उनकी प्रेरणा था उसको अपना स्रोत बनाते हुए हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चालू करा और आज हम जो कर रहे हैं वो 20वीं कड़ी है। इस कड़ी में बहुत सारे सेमिनार हुए हैं जिसमें जो मुख्यतः पहला सेमिनार होता, कुछ का मैं केवल उदाहरण करना चाहूंगा कि पहला जो हुआ था वो मास्टर प्लानिंग ऑफ द सिटी के बारे में था, जहां से हमने इस शहर को सही मार्गदर्शन मिले, शहर को मास्टर प्लान कैसा डेवलप हो और उसकी कुछ न कुछ चीजें हमें अच्छी ही मिली। सेकंड जो धवलीकर मेमोरियल लेक्चर था वो डॉक्टर AS आर्या रुड़की द्वारा प्रदान करा गया था, रोल ऑफ इंजीनियरिंग, जबकि बहुत सारी अर्थक्वेक की प्रॉब्लम थी और बहुत अच्छे अपग्रेडेशन हुए और लोगों को ये चीज समझाइश दी गई। इवन इंजीनियर्स का अपग्रेडेशन काफी कुछ हुआ कि हमें इंजीनियरिंग कैसी करनी चाहिए। कुछ उसमें से मैं उदाहरण करना चाहूंगा कि न्यूक्लियर पावर न्यू फ्रंटियर बाय DD भावलकर, एटॉमिक एनर्जी कैट, ऐसे ही करे गए। एक सेमिनार हमारा जो हुआ था उसमें डेवलपमेंट इन द सर्वेइंग इन द मैपिंग बाय पृथ्वीश नाग, डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेटको एंड फॉर्मर सर्वेयर जनरल ऑफ द इंडिया। ऐसे करते हुए हम आज 20वीं कड़ी पर यहाँ पर हैं। इस 20वीं कड़ी में मैं ये उदाहरण करना चाहूंगा कि एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर ये पहला फोरम था जब अर्थक्वेक भुज अर्थक्वेक आया था तो पहले 18 लोग दूसरे या तीसरे दिन वहां पर उपस्थित थे ये सेवाएं देने के लिए, जब कंट्री से कोई भी इंजीनियर्स नहीं मिल रहे थे। तब हमारी जो एसोसिएशन थी वहां पर सेवा देने गई और कंटिन्यूअस फिर सालों तक सेवा देते रही, जिसमें हमने कोई भी चीज ऐसे कभी चार्ज नहीं करा। तो इस एसोसिएशन के बारे में यहीं पर स्टार्ट में मैं क्लोज करना चाहूंगा और सभी से आशा करता हूं कि ये कोविड काल में जो हमें एक अपॉर्चुनिटीज मिली है हम इसको लें और ऐसे ही हम लोगों से कनेक्ट होते रहें, अपने घर में सेफ रहें, अच्छे से रहें। इवन बीइंग ए इंजीनियर हम दूसरों को जरूर गाइड करें। एक इंजीनियर की बात दूसरों को छोटे लोग ही मानते हैं, तो हमारी एक कर्तव्य है कि हम दूसरे लोगों की गाइड करें कि हम इस कोविड काल से कैसे भी मुक्ति पाए। इसमें मैं इस कड़ी में दोबारा मैं आमंत्रित करता हूं DG धवलीकर साहब के लाइफ स्केचेस के लिए।
इस बारे में प्रेजेंट करेंगे दीपक शाह जी। दीपक शाह हमारे एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं और कभी पोस्टों में रह चुके हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है मुझे मेरी आवाज़ से ही सबको संतोष करना पड़ेगा क्योंकि मेरा वीडियो चल नहीं रहा है। तो आई डोंट नो मेरा प्रेजेंटेशन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर आपकी स्क्रीन दिख रही है, बट आप एक बार और कोशिश तो करें। बस आगे फिर मेरी आवाज़ से ही संतोष करना पड़ेगा। आई डोंट नो क्योंकि मुझे मेरा वीडियो आ नहीं रहा अभी, है ना। तो मैं सभी को अभिनंदन करते हुए हमारे दादा के बारे में छोटा सा जो हमारा उनकी लाइफ के बारे में जो छोटी सी पीपीटी बनी हुई है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। लाइफ ऑफ ए कर्मयोगी और दादा प्रोफेसर डी.जी. दवलीकर। ये उनके युवावस्था का एक फ़ोटो है और वो हमेशा युवा ही रहे। स्कॉलर्स जो कि यूएसए के लिए 1948 में यहाँ से गए थे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, सेंटर में दादा हमको दिखाई दे रहे हैं। और 1952 में 51 में दादा जो है यूएस से वापस आए। जीएसआईटीएस उनकी कर्मस्थली बना और ये हम लोगों का सबका सौभाग्य था कि हमें ऐसे दिग्गज लोग हमें जीएसआईटीएस में मिले। ये मैं इनको एसम फोरसम कहता हूँ जीएसआईटीएस के। प्रोफेसर एम.वी. रंगनाथ, डॉक्टर एस.एन. दासगुप्ता, प्रोफेसर डी.जी. दवलीकर एंड डॉक्टर जे.पी. श्रीवास्तव, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स रहे हैं जीएसआईटीएस के। दादा की जो इंदौर में प्रेजेंस जो थी वो सिर्फ एकेडमिक फील्ड में न होके और सोशल इंजीनियरिंग के कोई भी प्लेटफॉर्म पे दादा हमेशा तैयार रहते थे अपनी सेवाएं देने के लिए। दादा ने ही यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स की ब्रांच यहाँ पे चालू करी थी। ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स इंदौर चैप्टर। जो लोग जानते हैं उनके लिए ये नई व्यक्तित्व नहीं है। एकेडमिक वर्ल्ड ऑफ इंदौर के ये दो महारथी है, मिसेस पद्मनाभम बड़ी टीचर और दादा। डॉक्टर डी.डी. गोवालकर जो इंदौर में केट की स्थापना होने पे यहाँ पे डायरेक्टर बने थे केट के, उनके साथ दादा। फेलिसिटेशन सुमित्रा ताई द्वारा किया जा रहा है जागतिक मराठी एकेडमी में। 12 अप्रैल 1998 को दादा के 75 वर्ष होने पे उनका अमृत महोत्सव रविंद्र नाट्यगृह में उनके सारे शिष्यों के द्वारा आयोजित किया गया था। ये कुछ झलकियाँ हैं उस अमृत महोत्सव की। दादा और काकू हमेशा साथ में रहते थे। फेलिसिटेशन होने के बाद में दादा ने उसका प्रत्युत्तर दिया था और शायद उस टाइम भी सबको डांटा ही था अच्छे से।
ये अभिनंदन पत्र है अमृत महोत्सव का। उस उपलक्ष्य में आपको कई लोग जो है इसमें जाने पहचाने नज़र आ ही जाएंगे। कुटुंबले साहब दिख रहे हैं, हमारे गोलवलकर साहब है, और मधुकर वर्मा जी जो मेयर थे उस टाइम पे इंदौर के, जीडी गिरवानी साहब। ये उसी अमृत महोत्सव की कुछ और झलकियाँ हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर के भीष्म पितामह को कितना मतलब प्रेम करते थे लोग, करते हैं आज भी। तभी तो हम आज उनका जो है ये 20वां मेमोरियल लेक्चर पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इंदौर के दिग्गज लोग उस समारोह में उपस्थित थे। मनोहर सिंह जी मेहता को मैं पहचान पा रहा हूँ। पर्यावरण मित्र पुरस्कार जो है उस टाइम के कैलाश विजयवर्गीय जी जो मेयर थे इंदौर के, उन्होंने उनको प्रस्तुत किया था। अहिल्या नाट्य मंडल में भी आपको फेलिसिटेट किया गया। वरिष्ठ नागरिक मंच के आप एक अभिन्न अंग रहे थे। ये जो कुछ आखिरी की तस्वीरें हैं, ये अफेक्टेड जो एरिया था जिसमें हम लोग साथ में गए थे और काम किया था कच्छ में जाके, वहाँ की अहमदाबाद और कच्छ में दोनों जगह जाके वहाँ पे ये तस्वीरें हैं बाटा। तो ऐसे तो हमारे दादा सरल सहज और सभी के लिए हमेशा उपलब्ध। थैंक यू। थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस डिफिकल्ट में भी इस अच्छे प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया। अब इस घड़ी में जो हमारे पास आता है कि उनकी लाइफ स्केच, मतलब उनके बारे में जानने के बाद में हमें उस प्रतिमा के जो प्रतिभा थी उसका हम सम्मान करें। और मैं यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने जा रहा हूँ, और आप जब थोड़ा सा इंतजार करें। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो फूल हमने अर्पित करे हैं, हमेशा एक परंपरा उन्होंने बनाई थी कि जो फूल हैं बाहर से नहीं लाए जाएं, और ये गुलदस्ता जो है, जो डिसेबल पर्सन है उस जगह से जो बच्चे बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये हम अपने सेमिनारों में ये फूल लाते हैं। और ये फूल ऐसे होते हैं जो कुछ दूसरे मटेरियल से बने होते हैं, जो कभी ना मुरझाने वाले होते हैं। तो हमारा उन बच्चों के प्रति हमेशा ये स्नेह बना रहता है। मैं चाहूंगा कि इस मेमोरियल लेक्चर के बारे में इस घड़ी में हम यहाँ पर आते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस मेमोरियल लेक्चर में स्पीकर के बारे में और इस सब्जेक्ट के बारे में
GSITS इंदौर के सीनियर प्रोफेसर खरे साहब, राकेश खरे साहब अपनी प्रस्तुति दें। Thank you, Mr. Pariyar. It's my proud privilege to introduce Dr. Abhay Gupta. Dr. Abhay Gupta is a famous academician, researcher, and consultant in the structural engineering fraternity. He is a very good manager as well. Dr. Gupta completed his bachelor degree in civil engineering in 1981 from GS Institute of Technology and Science, Indore, and then graduated in structural engineering from the same institute. He started his career as civil engineer and very soon switched to teaching. Attended University of Roorkee, now IIT, for doctoral research. Also attended IIT Kanpur for one semester certificate course in the area of earthquake resistant design of structure. He is instrumental in revision of engine standard for wind loads IS 875 Part 3 with his supervisor Dr. Prem Krishna. He was very active in his teaching career as consultant and managing many society activities and events, in particular Indian Geotechnical Society, Association of Structural Engineers, etc. He took VRS from the post of professor and started working in a structural consultancy organization, and now is one of the directors in Skeleton Consultants, whose project design of Lord Shiva statue will be presented today. I have to cut short many of his achievements, such as principal consultant for India's first international wind tunnel in private sector, member of VIS committees, and fellow of many societies, INAE fellowship, and supervisor of Best MTech Thesis Award. And list will not end if I do not stop here. Let us welcome Dr. Abhay Gupta and I give a big hand. Thank you. Thank you, Pariyar. You can continue, please. Yeah, thank you very much, खरे साहब, for presenting this one. बड़ी खुशी की बात है कि कहीं भी ये डिजिटल प्रोग्राम में हमारे सीनियर पर्सन हैं, कहीं भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दोबारा कनेक्ट हों, ये उनकी हमेशा रहती है। HI मेहता साहब यहाँ पर हैं, तो मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि HI मेहता साहब अपने आप को अनम्यूट करें और दो शब्द अपना चेयरमैन, एज ए चेयरमैन, दो शब्द यहाँ पर प्रदान करें। हेलो, या हमें आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी। मैं एसोसिएशन में मेरी तरफ से और एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और डॉक्टर प्रोफेसर DG धवलीकर सोशल इंजीनियरिंग ट्रस्ट की ओर से एवं अन्य संस्थाएं, सहयोगी संस्थाओं की ओर से मैं आप सबका ये अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और क्योंकि अपने नववर्ष की पूर्व संध्या पे आपको आने वाले नववर्ष की भी बधाई देता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमारे इस प्रोग्राम में पधारे और सबने ज्वाइन किया, जबकि बहुत कम समय में और कम सोर्सेस में हमने इसको, और हमारे खास करके सेक्रेटरी महोदय और दीपक शाह और मिस्टर DS परियार और मिस्टर शाह, इन लोगों ने काफी मेहनत करके और अंत तक मेहनत कर आके इसको, इस प्रोग्राम को या इस कार्यक्रम को यहाँ तक ले आए। ये भी मैं उन लोगों का भी विशेष अभिनंदन कहूँगा, अभिनंदन कर रहा हूँ। और आप सभी को इस 20वें विषम धवलीकर मेमोरियल लेक्चर में सबको आनंद लेते हैं। अच्छा, और साथ में ही हमारे ही साथी, अब वैसे इंदौर के ही थे हमारे साथ, अब दिल्ली विराजमान है, डॉक्टर अभय गुप्ता को भी
और डॉक्टर राकेश सक्सेना साहब का भी खास विशेष अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमको दिया। और मैंने तो वैसे अभय जी की मजाक भी की थी कि ये इनका पहला स्टेच्यू नहीं है, ये भी इसके पहले भी इनने एक हनुमान जी का भी ऐसी इतना ही बड़ा स्टेच्यू बनाया। तो मैंने तो उससे मजाक ये कही थी कि भैया इंसान, भगवान इंसान को बनाता है, अब तो तुम इंसान होके भगवानों को बनाने लग गए हैं। तो बोले नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, और कलाकार हैं वो लोग बनाते हैं। तो मैं उनका खास विशेष अभिनंदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। तत्पश्चात ऐसे देखा जाए तो जैसे दीपक शाह साहब ने भी धवलीकर साहब के लिए काफी कुछ बताया, और वो भी, और जितना बताया जाए उतना कम है, पर मैं उनको हमेशा दादा कहता था, और जनरली भी सब उनको दादा ही कहते थे। वो क्योंकि वो मुझे डांटते भी थे तो भी दादा के प्रेम के हिसाब से एक पोते पे डांट पड़ती थी, और प्रेम भी मेरे साथ उनका इतना ही था। और एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रणेता होने के नाते हम ये हमेशा उनको हमेशा याद रखते हैं और याद करते रहते हैं। और सिर्फ आज ही के दिन की बात नहीं है, किंतु हर यूं समझिए कि हर मोड़ पे या यूं हर समय पे उनकी याद आती रहती कि ये दादा ने हमको ये सिखाया था, दादा ने हमको ये सिखाया था। तो आज भी उनको विशेष याद करते हुए उनके परिवार लोगों को भी मैं विशेष अभिनंदन करता हूं, और आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। परिवार, थैंक यू वेरी मच HI मेहता साहब, आपका हमेशा गाइडेंस हमें मिलता रहता है, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद दूंगा। मैं यहाँ फिर से बहुत सारे लोग इस फोरम में जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोफेसर भाटिया, बहुत सारे प्रोफेसर, वेरी सीनियर पर्सन जो बाद में ज्वाइन करा है, मैं उनका पुनः स्वागत करता हूँ इस सेमिनार में। इस सेमिनार में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम्स को सपोर्ट जेके सीमेंट लिमिटेड ने करा हुआ है। इसके जोनल हेड यहाँ पर हमारे साथी प्रद्युम्न शर्मा हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और ऑल इंडिया हेड टेक्निकल सर्विसेज मिस्टर शकुन वैद्य, आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सीक्वेंस में मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट था कि इंजीनियरिंग ग्रांटेड स्टैच्यू 351 फीट लॉर्ड शिवा स्टैच्यू एट नाथद्वारा राजस्थान। इनफैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मैंने उस एरिया में विजिट करा, बट आज जो सुनने का मौका मिलेगा वो मेरे को भी पहली बार मिलेगा। और इसको हमने एक बार ही रिक्वेस्ट करा और उन्होंने हाँ करा, यस ये धवलीकर साहब मेमोरियल लेक्चर है, मैं बिल्कुल इसको प्रेजेंट करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अभय गुप्ता फॉर दिस प्रेजेंटेशन। यू कैन कंटिन्यू योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। Good evening, all my friends from Association of Structural Engineers and other professional societies of Indore. समय बहुत जल्दी बीत जाता है दोस्तों। 1976 में GSIT's एडमिशन के बाद I have seen myself as a student of Professor Davlikar. बाद में हमने कॉलेज ज्वाइन किया एज ए फैकल्टी, तब दादा हमारे सीनियर कोलीग भी रहे। उसके बाद एसोसिएशन में भी हम साथ में हमने दादा के गाइडेंस में काफ़ी काम भी किया। उसके बाद दादा के जाने के बाद हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की अच्छी प्रैक्टिस करें, उसको उस प्रोफेशन को अच्छे से अपनाएं, इस कोशिश में हम तब से आज तक लगे हुए हैं। और अब आज मेरा सौभाग्य है, परिहार ने मुझे थैंक यू कहा कि मैंने एक्सेप्ट किया लेक्चर देना, प्रोफेसर धवलीकर मेमोरियल लेक्चर। बट सही मायनों में तो आपने ये एसोसिएशन ने मुझे ऑफर किया कि आई शुड डिलीवर दिस मेमोरियल लेक्चर, इज एन ऑनर टू मी। हम कहाँ से दादा को देखते थे, हम उस जगह तो नहीं पहुंच सकते कभी भी, लेकिन आज अगर उनकी स्मृति व्याख्यान में
मैं अगर अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हूँ, so it is my good fortune and my privilege that I am here to deliver this lecture. I can see many important people in the audience, virtual audience. गुरु प्रोफेसर ओपी भाटिया साहब हैं, और naturally since this statue has a large amount of concrete used in this, and that too when we claim that it is going to be designed for 250 years of life, so none other than Professor Bhatia would be happy and would be the person raising questions also on that. So I am happy to see, sir, you among the audience here. Second, I see Colonel Sanjeev Argal. आप लोगों को नहीं पता होगा, कर्नल संजीव अर्गल इज द फर्स्ट पर्सन जो इस प्रोजेक्ट में मुझे लेके आए. कर्नल संजीव अर्गल was the project head of this project in Nathdwara from Miraj Group, and he started this project. Am I audible, Parihar? Well, am I properly audible? Yes, sir, you are audible. Okay. So Colonel Sanjeev Argal is there, and Colonel साहब ने इस प्रोजेक्ट को काफी हद तक आगे बढ़ाया, and then he went out for some other assignments, but the basic foundation was laid by Colonel Sanjeev Argal. One more important I see in the audience is the family of Professor Dhavlikar. I could see Himanshu on the screen. तो मेरा नमन उस परिवार को जहां से हमें बहुत मार्गदर्शन मिला है. I can see my father-in-law in the audience and my younger brother. They are out of curiosity. What is this project? They are also here. And our Dr. Rakesh Saxena. Congratulations, Dr. Rakesh Saxena, for having another extended term as director of GSITS. And I'm sure the institute will do good in your next term. So congrats to you. Colonel Sudhir Tamane, I could see. Besides all my structural engineering friends, Colonel Sudhir Tamane is another cement expert, concrete expert, who is there in the audience. So friends, I'm so happy that I am privileged to deliver, I'm privileged to present this particular project to you all. This will be about an hour presentation. So I'm sure that you are all geared up, and hope you will have patience to listen and see the project, which started somewhere in 2013 or 2014, you can say, and is almost complete now. The statue is complete in all respect, more or less. But the project size is big, so many other things are going on. I see Amitabh Dhar also joined from Canada in the audience, our old structural engineering friend from India. So I'll be presenting to you this project through different presentations. There are several aspects of this project. Just a brief story, how this project came to me. Generally, we try to get the projects. We go to the client and meet them. Somehow, Lord Shiva blessed me, and Diwali 2013, I got a gift in a pack box. Generally, people will send Lord Ganesha or Lakshmi Ji on Diwali. I received a small Lord Shiva statue on that Diwali. And I was really thinking, who must have sent? How Lord Shiva has been sent. And that I was just thinking, and somewhere that month, immediately after Diwali, Colonel Sanjeev Argal called me. Dr. Gupta, we got to know about you, and such project is there. Will you be interested to do the proof sticking of the design? And this is how I entered into that project as a proof consultant, but then later on the whole responsibility was given to us with some discussions, and then we were on board in January 2014 on this project. The blessings of Lord Shiva, it was there. We never did such a project. Not me, most of you, we haven't done. We do industries, we do buildings, we do dams, we do bridges, we do many things. But a statue, that too of this size, before that I even didn't do any small statues. But the only thing is I knew that I can do. If it is a doable thing, I can do. And probably Professor Bhatia will endorse that statement, that I never said no to something which can be done by anybody else. So this is how we got into this project.
We started working on that, and I'll tell you through the presentation that what are the challenges and how this project has been done. Though we call it to be a 351 feet high, but that is the height of the actual statue in sitting posture. When a 5.5 feet person, a human being, sits on chair, he measures 3.5 feet from the floor. So the same thing is here. This is 351 feet measured, but actually it is 550 feet high. Human shape, human size, which is in sitting posture, measuring 351 feet. So all other organs are 550 feet size. I don't know whether Naresh ji is also in the presentation. Mr. Naresh Kumar, who is the Murtikara of this project, actually he is the main person, Mr. Naresh, whose complete creativity, whose imagination is there. Something has to be visualized. Something has to be visualized, that standing on the ground where your eye level is 5.5 feet, how something at 351 feet will look alike. And it should look real in proportion. Something which is close to your eye will be larger, and something which is far away 351 feet would look smaller. So that has to be proportionately enhanced. And that thing has been wonderfully done by Mr. Naresh. We are working with him on many projects. Now almost 7 or 8 more statue projects we are currently doing. I'll tell you about. So this was the team. Colonel Sanjeev Argal from Miraj. Later on, Rajesh Mehta ji took over. I don't know whether Rajesh Mehta ji is there. If Rajesh Mehta ji is there in the audience, just please say hello on the chat. So Rajesh Mehta was another dynamic project leader who really saw this project getting complete. Rajesh Mehta. Mantri ji is there. I can see Mr. Rajendra Mantri, who was the basic first architect of this project. And Colonel Saab and Mr. Mantri, they both took us into this project. Then we have Shapurji Palonji, the construction company. They did a wonderful thing. I'll tell you more about that, Shapurji. So a team comprising of these people made it happen from 2014 to 2020. You can say by 20 it was, no, Akanksha, wait for the presentation. I'm going to start now. There's a story so that I connect you all to that thing. That's important. So now when I'll start the presentation, where there is much of the thing to be shown, I'll be taking it up now. So Mantriji is there. I'm happy that Mantriji, Colonel Sanjeev Argal, the two old stalwarts of this project, they are here. And then maybe Rajesh Mehta ji also there, and Naresh ji. So friends, I'm going to start with a small presentation, which you can say a trailer or a teaser. So I will give a fast brief about the project, and then I'll take you to the detailed things. Yeah, Karan sir. So I'll share. I think I can share, na Parya? Yes. Yeah. Okay. Is my screen visible? Yeah, clearly visible. That's great. So making of a monument, steel concrete hybrid structure for Lord Shiva statue at Nathdwara near Udaipur. This is the Google Earth location. The mark, if you can see on the top, this black, this is the highest point on the hill where Lord Shiva statue is proposed to be placed. Okay. This is the original location. Foundation, when started excavating, this was the earth. And from there we have brought to this level. That is the objective. We all know about buildings, very complex building. Gherkin in London, the inclined tower. If Irfan is there, if Irfan is joined, another Seksarian, he is the person behind this inclined tower of Middle East. Then we make bridges, different type of bridges, long span bridges. If my Professor Prem Krishna is also on the audience, Professor Prem Krishna is one who not only helped me achieve my PhD or doctorate, but also is still guiding on many projects, and he was the proof consultant on this project also. So, Professor Prem Krishna is another instrumental person in successful completion of this project. So he's a bridge man, a lot of cable stayed and other bridges. We do industrial structures. We do air traffic control towers, communication towers like Pitampura. We do chimneys. These are all very complex, tall structures.
But this is a mix of all these things. This is tall, 351 feet high, but not a 35-story building. This is gigantic, but not damn. This is complex, but not like a 3D space frame. Jayesh would appreciate that. I see Jayesh and Atul Shet in the audience. So Jayesh would appreciate a very complex nature 3D space frame. This is complex, this is much more than that. So a mix of all these things where the geometry of the statue changes at every feet height. 0 to 351, there are 300, you can say 351 different cross sections of the statue. How the whole process starts like a small mock-up model approved by client, enhanced to a 7 feet high, enhanced to a 14 feet high, where all the posture, expression, everything is then finalized along with the sponsor, the client, Mr. Madan Paliwalji of Mirage Group, who took this challenge to make such a huge monument. He spent hours and hours at sculpture studio and finalized this statue, and then this is the one which is kept there. And when we start working, we have to do the 3D scanning of this statue and convert that to a digitized section. These are the sections at every, say, 5 feet or 10 feet height. And then we start the process. So the next, where is this? Hold up. Next is when we do the scanning and when we create a 3D model in the computer, we make slices. Each slice is a 5 feet high slice, different colored slices are there. These are virtual slices. Each slice is then separated for each and every component. Complex junction like this. The right hand of Lord Shiva placed over right knee and left foot. That junction was the most complex junction to be analyzed. You can see that 3D views of that. The another one, large cantilever of the left leg. When you sit in a sitting posture, when you be in a sitting posture where your one leg is placed over the other, then the entire left knee is cantilevering out from the thighs, and this is at an elevation of 160 feet in this. The cantilever itself was 60 feet on one side and more than 100 feet on the other side. So that was the most challenging part. These were the most challenging part of this statue. This is the process of making the statue, where the entire statue has been converted into thermocol, high density thermocol pieces using a 6 degree of freedom robotic CNC machine. And that CNC machine helped the sculpture to draw the thermocol pieces of a full size. On the right side, what you see is not the actual statue, but it is a dummy being made in Manesar near Gurgaon. Thermocol dummy, this entire thermocol dummy. And on this thermocol dummy, then we put the glass fiber, and the glass fiber molds are then drawn out of this dummy. As far as structural engineering is concerned, we have used STAD and ETABS, both the software. We have modeled the entire steel frame inside. This is a hybrid structure where internal is a steel structural frame and with 3 RCC core shear walls, and external skin is a cast in situ concrete skin, M40 grade, self-compacting concrete, high performance. What I mean by high performance, client gave us a mandate that it should have a design life of 250 years. I never worked on a building or a concrete mix design. The only thing I knew that I have to protect this concrete for anything which comes in 250 years. The 250 years, what are those loads, forces, environmental factors? So we did all that. I'll give the details. Normal Fe 500, but corrosion resistant steel. The internal steel structure was made with the universal beams and columns of 350 MPa supplied by JSPL. Connections were all galvanized high tensile bolts, and wind speed for which it is designed, because we wanted a 250 years of return period wind speed. So that was 70 meters per second basic wind speed for which it was designed. Seismic peak ground acceleration. Though Nathdwara is not seismically active area, even there are no active faults or lineaments around that. We studied the entire seismology of that area, and zone 2 as rightly classified in the code
but we went on to use a higher value, and 0.36 PGA, which is equivalent to a zone 4 condition with an importance factor of 2. So practically 0.72 PGA was there. Entire skin is 20,000 square meter of the area, 2 lakh square foot area of the concrete skin. So you can assume that it is huge. The next thing is, this is how the stat section, these two hatched walls you see, they are the concrete core walls. So one concrete core wall goes up to 110 feet, one goes to 320 feet height, that is up to the head of Lord Shiva. Here you can see, and then stairs going by the side. This is what was providing the main lateral load resistance to the entire structure along with the concrete skin. When we did the analysis with the frame only, the stiffness was much low, only the frame and the core walls. But then when we modeled the entire skin, the stiffness was increased by 8 times, and that gave us a complete pyramid. It was 60 meters by 45 meters of the base and 107 meter height. That was giving a complete pyramid shape when the skin was cast. So that gives us a good benefit on the overall entire stability of the structure. Wind tunnel testing was conducted. I'll show you about the wind tunnel testing. On the top, you see the yellow color, that is 1:200, 53.5 centimeter high model of Lord Shiva, which is made using 3D printing technology with ABS thermoplastic. So that was the model hollow from inside. This is the model placed in the wind tunnel at Sydney, Australia. Windtech. Windtech is a well-known wind tunnel testing or wind engineering organization, and Windtech provided us very good information about the complete wind induced response of this structure. I'll tell you more detail. This trishul which you see by the side, this is 170 feet freestanding from here to here. 170 feet above and 110 feet below. But this 110 feet below is somehow it is supported structurally. From here to this point is completely free. And since this is free, when the wind will blow between head and trident, there will be an aerodynamic passage. And for that we did this another model testing. Colonel Sanjeev Argal, Mantri ji, Mehta Sahab, I think we all witnessed this wind tunnel testing. Myself and Mehta ji, Naresh Kumar ji, we went to Sydney along with Professor Prem Krishna, and we studied all these things. So this was another model made on a 1:100 scale just to see the aerodynamic effect of presence of this rigid head on the trident. So there were 2 different tests done. One more test was done. Right now there are no tall structures around Lord Shiva statue in Nathdwara as such, because Nathdwara is a small town. But in 250 years, you don't know what developments will take place. So we conducted one windrows diagram study, and the predominant wind direction, which was like this from here, we created some blocks of buildings, of high-rise buildings, some 25-30 floor buildings, imaginary, that if they are there, we created those and then performed one more wind tunnel testing with the effect of existing buildings. So that was all done there, and we got a very good report. This is a pressure tapping distribution over the entire surface. I'll tell you more about this a little later. The detailing on the left hand side, you see the detailing for the mold making, the form work. It is for that. All the slices, each slice, there were about 7,000 plus molds of glass fiber, which were made on the thermocol dummy and then taken. While on the right hand side, you see these two, the entire internal steel structure was detailed using the software Tekla. This was such a complex 3D varying structure that no 2D kind of the platform support was able to support the detailing. And since the entire steel structure was to be fabricated on site, establishing a workshop, so the detailing has to be very, very perfect. And we employed Tekla software. Most of you might be aware of the Tekla. So these are the images drawn out of Tekla
complete model in Tekla, and then we drawn the shop drawings. And I'm very happy to mention here that there was not even a single error on site while assembling the components, not even a single error. So that was a wonderful work done. And this is how then it turned out to be in stages. And this is how, when the concrete skin was cast, you will be very surprised to see that each and every of these curves and cuts and ups and downs and the variations, the Jataएं Shivji ki, Kundal Kaan mein Kaan, none of them is rendered. Everything is actually cast in situ concrete using the glass fiber mold. Everything. There is absolutely no rendering on this structure of any kind. It is all completely cast in situ concrete. And here you see there's a gallery. There's one gallery here, there's another gallery on the other side for people to come out and see. One is at 270 feet, one is at 280 feet. So this is the structure which is completed from there to here. I visited this place 2019 February. That time it was like this, and then slowly, completely like this. So this was a small brief. I'll take you to a better detailed presentation. I'll request to the audience, somebody is scribbling over the slides, so please avoid that. You will enjoy more. You can have your questions and post them on the chat. Now I'm going to a much detailed thing on the presentation side. That was a small brief about everything. This is the overall project. 15 acres of land it was. Now another 10 acres of land has been added on the backside, which is also being developed with some more very innovative and creative items, which you will come to know soon. But right now it is this much is the project. All this complete theme park, entertainment, all this water body, everything has been ready. It is ready now on site. If you visit Nathdwara, please go there. Inauguration is yet to be done, but anybody going there, just give me a call and we will organize that you go inside the statue and see everything. This is how it looks from a distance. You can see this statue from almost 20 kilometers. Anyway, and in the night, such a beautiful lighting is there. This is the, okay, let me switch. Yes. This is the entire project, 65,000 square meter of the project area, and some more information about the project, which is other than a statue also. During construction, a drone photograph, you can see everything in progress and see the gigantic size as compared to the other things which are there. This is visible from 20 kilometers, surface area 20,000 square meter, 2 lakh square foot of the concrete skin, and it is without any joint. This entire 2 lakh square foot of skin has been continuously cast using green cutting. Professor Bhatia would appreciate the green cutting, and other concrete technologists who are present on the audience, that we have used the green cutting of the every joint and then continuously casted and cured. Since glass fiber molds were there, and 1, 2, 3, 4, when the fourth layer of the mold, means 5, 5, 5, 5, 20th feet was done, then the lowermost layer of the glass fiber mold was removed. So how to cure for those many of days? For that, special curing arrangements were made inside the forms, and we used to cure the skin for 45 to 50 days minimum. Because I have learned one good thing in my professional practice, and even from my days of the concrete technology in college, that curing is the best friend of concrete, and it helps. When you design a concrete for M25 or M30, it really gives that strength and performs better and durable when you cure it well. So even in my professional practice, I have made it mandatory that 28 days of curing should be there on the concrete. So with this 45 days of the curing on this 2 lakh square foot of skin without a joint, since completion, it's almost more than 2 years now when the skin is over, complete. There hasn't been any crack, any kind of shrinkage crack also.
on the skin. You go close to the skin and you see minutely there hasn't been any kind of distress so far. And touch wood, by the grace of the God, it will perform good. So that is one of the reason of the durability. So wind speed, structural steel is 2,650 metric ton, reinforcements to 700 metric ton, concrete in statue is 8,500, but concrete in foundation is another 10,000 cubic meter. This is metric ton, but in all more than 15,000 cubic meters of the concrete has been used. There are 3 staircases and 4 elevators, and there are galleries for people at 110 feet, which is top of the hillock, the artificial hillock which has been created, and 270 and 280 feet by both the side of the ear, where people can come out. About 10 to 15 people can stand up in one time. That is the thing. Very important names associated with the project: Mr. Rajesh Mehta, though Colonel Sanjeev Arbil's name is not there, but it happens like this, that only those people who are in the beginning, and if they are not towards the end, then clients or they forget their names. But we will never forget the contribution of these very great people. So Mr. Rajesh Mehta did wonderful finishing of this project and even taking care, but others are also important. Mr. Naresh, our Murtikar, doing very good job. My team, from my team, Vandana is there in the audience. I see Vandana Verma is there. Vandana is from GSITS only, and Vandana was the main designer of this project in my office. Then there is an architect. After Mantri ji, this new architect was appointed. They are doing some other works, not the statue part. And Shaporji Palonji, no doubt, they did an excellent job of not only concrete, but steel fabrication, erection. The complete project, they managed very well and completed. They made it sure that it is completed. So this is the team which worked on this project. Now, I'll skip this about skeleton consultants. You all know myself, Jay Jain, Arun Sodani, we 3 other partners. We operate from Indore, Noida, and Bangalore. And besides other things, we are doing a lot of statue projects. And as H.I. Mehtaji told, one of our project, Lord Hanumanji at Solan, 155 feet high, his tallest standing statue of Lord Hanuman in hills, is entered into Limca Book of Records last year. So that is another good achievement. But besides that, we are doing 151 feet high Lord Hanumanji in Koradi near Nagpur, 108 foot Ramchandraji at Guna in Madhya Pradesh, 121 feet Lord Shiva in Jajpur, Odisha, then 108 foot Hanumanji at Nimrana, 72 feet Ramchandraji at Alwar. So there are some 7-8 statues currently being done. We did one in the Canada also, Toronto, Lord Hanumanji, 61 feet high at Vishnu Mandir, Toronto. Amitabh has personally seen that, I'm sure. He visited also. So that is also we did. Second one is in progress at Hindu Mahasabha Temple in Toronto. Right now, they are 55-60 feet high. These are some of those images. The first one, Lord Shiva. Then second one is the Toronto. Third one is the Solan under construction. Fourth one is this posture of Lord Hanumanji is rare. And this is 121 feet high in Faridabad. And that is also completed. Friends, statue engineering is not something which is in books, which is documented. But there are different type of statues which have been made around the world. We all know about Tiruvallur statue in Tamil Nadu. It's not very tall, but it is very, very special. It's a granite stone statue, single. Then Statue of Liberty, we all know. Again, it is not very tall, 151 feet high. But the construction technology of this Statue of Liberty and that of Lord Shiva statue is same. Internal steel structure, external concrete skin casting. Sardar Patel statue, which I'll show you, that is tallest in the world as of now, but that is a different technique at all. There inside is steel skeleton, external is you can say cladding, bronze cladding. The casted cladding pieces have been brought from outside and they are fixed on the skin. So it's not a complicacy like cast in situ. And then since it is standing, so again much simpler as compared to the sitting posture Lord Shiva.
This is Lord. This is Statue of Liberty construction time photographs, images. Then Jesus Christ, 31 meter. Then Bolivia, another one is also coming. Christ the King. Different statues are there. They are again steel structure and then concrete. Different stages of the construction. So worldwide there are statues being made. In India, certainly we have many. Christ the Redeemer. Somebody posted on the group also today. I think Amjad, if Amjad is there. Amjad posted one that Christ Redeemer. Another one is coming up 43 meter high, much simpler. This is a straight one. See, the posture is such that there is a central structure and then the arms are flowing out. We are also being involved into the construction of 351 feet high Dr. Ambedkar statue in Mumbai, which is coming up. But the biggest challenge of Dr. Ambedkar statue is the out protruding hand, the finger which it shows. So when a 351 feet high statue, this finger which is coming out is almost 200. This hand which is projecting out is almost 200 feet. So we all must appreciate the engineering of the Almighty God, that we all can keep our hand straight like this in air for, if not hours, for several minutes. So there is a definite cantilever mechanism or a balancing mechanism there in the body. But when we try to design that structurally with the available material, we find it to be quite complex and challenging holding that. So our Sardar Patel statue, 182 meter, 597 feet, 589 it should be exactly. And then Ayodhya Ramchandraji is coming up. That is much taller. The 9th number, Arabian Sea Shiva Smarak, 192 meter. It's not coming up. It's hold. It was proposed, but there is some dispute going on. The lower one, this is the Statue of Equality in Mumbai, the one which I am mentioning, the bottommost. So friends, there are different types of statues around the world. We studied many of them to see what best can be done. We did a SWOT analysis also, that what will be the best thing for the internal structure, means material wise, what would be the best thing about the skin. There can be a concrete skin, there can be a metal skin, there can be a glass fiber skin. So there are different type of skin options were there. We evaluated all of them. And then finally, here, the best we thought was concrete, though it took a little more time, but this is cheaper also. The entire project cost of Lord Shiva statue is approximately 100 crore of the statue only. The rest of the things separate. Whereas the cost of Sardar Patel statue is 3,000 crore plus. So huge money. It's much together different thing. These are the various stages. We start from the leftmost. This is the section of the STAD model where the most complex thing I'll show you. Okay, when I'll just come to that. How we reach from this stage to this stage to this stage. When it is changing geometry at every 1 feet, how we did that. This is Canada, Solon, and Faridabad. Okay. Are you able to read this entire slide? I hope so, because there is some strip coming on the top. In all above, the complexity lies in identifying the plan layout at various levels. That is most important thing. With the aid of latest technology of 3D scanning and digitization, what is done is you make a small mock-up model first. If that is okay, then you scan it 3D, then it is fed into the machine, and then we get a little bigger, means enhance it 4 times or 8 times like that. Then when you enhance it, you need to tweak to the expressions and to the postures. Then again, sculpture, Murtikar will do their work, their skills will be required to convert that to a desired shape, desired posture, desired expressions. And then again it is scanned, and then again it is enlarged to a little bigger. So finally, we got a 7 feet high model. Then 7 feet high was discussed, approved, and then it was again scanned, and then a plaster of Paris or a special earth
clay is used to make a bigger model of 14 feet high. 14 feet is roughly 1:24 scale for this. So that was made, finalized, and then a very fine 3D scanning of the entire statue is done using highly sophisticated machines, equipments, which fortunately our sculpture Naresh has all those things. So that all is, scanning is done. Once that scanning is done, we get cross sections at every level. Now what fineness, what changes, what variations we want to capture. So we decided to use cross sections at every 5 feet level. So in 350 feet high, we had almost 71 cross sections. These 71 cross sections are to be assembled one over the other like a wire thread diagram, wire thread output, which I showed you, wire thread output like this. You can see these X and Y direction, axis marked, and the entire statue is scanned. And I get a cross section at every 5 feet with one common axis. So sculpture provides the 3D scan data of approved size and desired expression. Structural engineering and design of main frame supporting the external shell and the design of shell itself is done. A resourceful construction agency is there. So once we get this, then we reach to this thing. This is the most important part as far as structural engineering is concerned. This plan on the leftmost side is at some level. Okay, this is at some level, a lower level, less than 110 feet. Then as you go up, you can very well imagine this is the left leg which is fold over the right knee. So this must be around 150 feet level, 150, 160. And then going further up, the section size is reducing. Now in all these, we start the structural planning from the bottom. We put the structural grid and the structural columns. You can see this. Each one is at 3 meter by 3 meter, something like that. And then we see how many of them can be continued at the upper level. Not from straight away from 100 to 160, but 100, 105, 110. At every level, we put these structural elements in plan and see which elements are going up. Now looking at the shape of the statue, you can very well imagine that till the moment you cross the waist of Lord Shiva, suddenly there is a reduction in the geometry, patli kamar hai. So some of the elements had to be stopped there. Then again it widens. You see the broad shoulder. So there we have to take a lot of cantilever projections properly supported over the brackets from the existing structure. So these concrete core walls helped us a lot. And we took the cantilever members properly supported by bracket from the bottom at every level. So that was the most typical exercise to be done as far as the structural engineering is concerned. And then throughout the skin, you see this skin periphery, we traveled, we took one runner which is going along the periphery into this shape, and that runner was connected to the main structural frame every level, and the runner had connections to the concrete skin which was going to be cast in situ. So when the formwork was put, and the formwork is glass fiber. This is about the different Lord Hanumanji statue being straight. You can see not much of the variation in geometry, but there is another challenge with such statues, that something which is coming from bottom suddenly disappears at upper level because that there is inclination or change. So those things are there. The complication here was this was a non-symmetrical structure in all directions. There were irregularities. So our earthquake code says, though it is written for building, but certainly some provisions we have to make here also. There is no separate code for monuments. So we have used that 1893 part 1 only, which is general. So irregularities are there. Structural steel frame and shear walls are there. Okay. So on the right side, you can see the steel members, a 3D model made from where which steel member will go up. This is another. So when we calculate, right now I'm in the analysis part only. There is no live load as such
on the statue, but in this particular statue, there were intermediate floors. There were floors at 20 feet, 40 feet level. So there were some live load. Those floors have been introduced for the purpose of creating some museum or some kind of assembly halls inside by client. So those. Otherwise, the dead weight of the skin and that of the structural member itself, we applied the skin dead weight on every nodal at every 3 meter. There was a framing at every floor level. So we applied the nodal loads there. The concrete skin itself, which was supported between two floor levels of say 3 meter, and vertically, horizontally, there were some members running vertically. So between that, one concrete panel was there. So there was a question raised by our proof consultant, Dr. Prem Krishna sir, that please check the skin, the concrete skin for the wind pressure and the thermal gradient. Nathdwara is such a place where the temperature ranges 0 to 50 degrees variation, annual variation. But even day variation in summers would be like morning less, daytime quite hot, and as the evening goes low, in the night it is quite cold. And then another challenge, since the skin was minimum 200 millimeter thick, as thick as 400 also at some places. So the temperature outside and inside was also much different. And since that was much different, so there was a thermal gradient which was being set up. And that thermal gradient could have been really dangerous and it would have developed cracks. So we analyzed the skin for that thermal gradient in addition to the wind pressure supported in a panel, and then provided the reinforcement accordingly. And it is sustaining well as long as last 2 years is concerned. It is going well. Then comes the issue of wind loads. Data was collected from 3 nearby airports about the wind flow pattern in that area. Straight away, IS code wind was not used. There are 2 more documents, international documents, which covers the Indian wind conditions also. And from there, the predominant wind was worked out. And then depending on the return period of 250 years and other things, design wind speed was calculated, which was coming out to be almost 77 meters per second, for which the wind tunnel testing has been carried out. And this wind tunnel testing has been carried out at Sydney in the Windtech laboratory. We went there, we studied there the wind pattern and all that. We discussed with them for almost 3 to 4 days we were there. These are the diagrams of the wind tunnel testing. This leftmost is the pressure tapping distribution. The entire skin of the model, which was 53.5 centimeter high, was divided into several zones, and 726 pressure tappings were put on the surface. These pressure tappings were connected to the instrumentation below through very thin pressure tubes and from the inside of the body of Lord Shiva. These are the 2 wind tunnel tests which have been conducted, and these are the wind pressure variation diagrams on the surface. So I'll show you. Okay, this file is not there. Let's skip it. I'll show you. I'll just skip and switch to another presentation where you will see a very good thing about the wind tunnel testing. Okay, so are you able to see this yellow model of Lord Shiva? If somebody can confirm. Lord Shiva. Yes, it is visible. Yes, sir. Yes, Yes. yes, So it is visible. next is, this is the model you can see from both angles. This is the model placed in the wind tunnel, and just this small block here, nothing else. This is existing. Then this pose, and then this one you can see from different directions, and the result that is obtained, I'll show you the pressure tappings. You will see that this screen is turned into black, and just try to see some images coming up on the screen.
Are you able to see Lord Shiva, white image? Yeah. It is Okay. clearly visible. So this one is, if you see, all these T502, 503, they are the pressure tapping numbers on the entire skin. Just a moment, very sensitive. And this entire thing is all around. And you can see from all sides that pressure tapings are distributed right up to the top, even on the trident, hand, snake portion, the moon, the crescent moon. Everywhere these pressure tapings have been distributed, and they are 726 in number. Correct? So these 726 pressure tubings, they were connected to such sophisticated instrument that each tapping in all 726 were recorded simultaneously. This is the biggest plus point of a facility there, that they have such good instrumentation that all the 726 pressure tubings were connected to the pressure sensing transducers, and it was scanning all 726 simultaneously. So this gives the advantage that there is no difference or a time lag between the different measurements taken on the skin. So whatever pressure was measured on the skin, it was all simultaneous at one time. And the frequency of the data collection, frequency of wind sample being taken, the pressure sample being taken was almost 300 samples per second, which is huge. 300 samples in 1 second. So in our wind engineering, because wind is a random phenomena, it has a fluctuation. To capture those fluctuations, we need a frequency which is high from the data acquisition. So 300 samples per second was a very good wind speed. And what we ultimately got is this result. I'll show you. Okay, see this image. These three postures of Lord Shiva, there is same one image, only one testing, but from three different directions we are showing it. On the left side, you see the reddish color of variation, which is pressure. This is the direction of the wind. The right side is the opposite side, back side, where there is suction, so it is all blue. On the rightmost side, if you try to read the figure, in the blue at the bottom most is written minus 5.4. Minus 5.4 kPa pressure is there, which is very high, which we do not get just by using the codal value, the calculations. And on the positive side, the value is 2.9 kPa. So all these red on the right side, on the left side image, you see these are the pressure areas. And on the plan in the middle image, you see the arrow which is showing is the predominant wind direction from where wind will come most of the time. So this was the complete pressure visualization. It was only from the viewpoint of visualization. Otherwise, we got the entire report with the, you can say, values and all that. Okay, friends. I'll just prove this. So this was about the wind tunnel testing. Then construction. Now you see the core wall 2, 3, this slide, foundation and shear wall. Yeah. So this is one of the stages of the construction where internal structure, once the foundation is done. Now this foundation also had an issue. I have not described so far. The place where the statue was proposed to be kept, when we did the geological study of that, there were 70 degrees sloping stratified rocks. Rocks were good, but they were layered, and there was a fear that under the heavy load of Lord Shiva statue, if there is any kind of earthquake shaking, then these rock layers may disintegrate, slide like that. So what we did,
we did the rock anchoring. The entire statue foundation area has been rock anchored using 8-meter long anchors. 7 meters are drilled inside and 1 meter has been taken inside the raft which is cast. So the entire foundation has been completely binded with the rock mass, and the rock mass has also been binded completely. While doing the excavation, while doing the drilling for the anchors, several voids we could observe. There were deep voids, means 100 mm dial kind of thing. So all those have been grouted using cementitious grout, and then rock anchoring has been done. One of the paper about this improvement or the foundation for a irregular statue structure was presented in the recently concluded Indian Geotechnical Conference 2020 also. So that was some specialty about the foundation of this structure. And then when the raft was done, then the steel columns were erected. Computational fluid dynamic study were also done for ventilation, but I am skipping that for now. This is the important slide, friends. I explained the modeling, then 3D scanning I explained, then scaling and slicing I explained. This is the various stages from the sculpture. Then programming is done in the CNC machine, cutting and milling of the thermocol, and then joining of the polystyrene, that thermocol, polystyrene. It is assembled and formed like this. The complete dummy 1:1 scale dummy has been made, assembled on a site in Manesar, and then over that POP finishing was done, plaster of Paris, and over that glass fiber. These are the glass fiber molds. They are stiffened like this. You can see numbering also. So these glass fiber molds are then taken to the site, 7,115 in number. Huge number. Each not less than about 30 square feet, which makes 2 lakh square feet area of the total skin complete. This is the measure. Now the important aspect of concrete, because steel is a controlled product, 350 MPa we were getting, no issues. The only skill that we were to show was in the fabrication and using good hardware. Nice. Foundation we did well, but the skin concrete, which is going to be subjected to the environmental parameters. The concrete mix design was done from Rajasthan Technical University, Kota. All the concrete was designed keeping in view the durability parameters. Then ultra fine GGBS, Alcofine, we all know. Rahul Mathur is also there, I believe, in the audience. I could see Rahul's name. Rahul is an expert concrete technologist, and we always contact him whenever needed. So this GGBS Alcofine was used as the performance enhancer and as a replacement of the cement. And then innocuous aggregates from the Haldi Ghati, river from Banas, and crushed sand from Haldi Ghati were used. Testing of material and concrete was done as per the approved MTP, and then testing of the concrete was also done for the performance. Various tests were conducted. Even the you can say the saline water test was also conducted. Long-term effect of chlorine, ammonia, SOx, and inorganic gases can affect durability. So for that, concrete cubes were dipped in 2% solution of nitric acid, sulfuric acid, and hydrochloric acid. And so that simulated the long-term durability effects, long-term durability conditions. So weight loss and deterioration in strength was observed, which was to be less than 10%. So mix was finalized. So these all exercises were done, and on-site atmosphere was taken to control the temperature, the quality of the material, and everything. So these were some of the preventive measures, if you see, they were done. The concrete, which is one of the most important ingredient for this statue being exposed, so that was very well designed, made, poured, and then maintained. And this is how the skin is quite, you can say, flawless even as on date.
and I'll show you some of those things. These are some of the shear walls of during the construction. Structural fabrication was done on the site. Besides the main structure, the fabrication for the snake. You see, शिव जी के गले में पूरा एक सांप है जो कि यहाँ से वहां तक. So that entire, that is MS pipe which was fabricated like that. जो यहाँ पे hood है snake का, that is designed by a frame inside and then external metal sheet. माथे पर जो चंद्रमा है, crescent moon, that is also a fabricated below and then placed there. And the trident trishul, which is one of the most challenging thing, you can see, this trishul is a 50 metric ton component. This trishul is 50 metric ton component, and it was made and erected in several parts using very special cranes and all that, and then assembled. Because while working at that height, 280 feet, strong wind was blowing. So whatever welding was to be done there, it was very difficult for the persons working there to get stabilized at that height. So that was a big challenge. And the team did well by doing the strengthening, because this entire stem, the stem part of trident is concrete. Though we took all the cares in controlling the tensile stress of the concrete under the bending, but additionally we used glass fiber, carbon fiber wrapping over the half of the height of this trident, just to ensure that there are no fine hair cracks even during the strong bending, strong wind, which otherwise may create a point of deterioration starting. So we wrapped the half of the height of the trident stem with the glass fibers, complete glass fiber mat. So that helped us to get more confidence that this is going to perform better. Nandiji is also made there, though not designed by us, a small structure. Somebody has done. We did the proof checking on that. Some of the construction stage, once the concrete skin has been, the mold formwork have been taken out, how it looked. Eye. When you see from a distance, you may feel that this eye is painted, but actually it is a cast in situ eye. This is a time-lapse photography, but I think we'll skip this and I'll share this with you. There's a complete time. There are cameras installed at 4 directions. You can see this. They are recording all 24 hours on the site. Several awards this project has won, but I'll just come to the award a little later. Just give me some more time. I hope आप लोगों में आप में से जिन लोगों ने डिनर नहीं किया है, उनका डिनर में थोड़ा देर करवा रहा हूँ. And I'll just show you something. Okay. Are you able to see this slide? Lord Shiva statue at Nathdwara, stages of construction. Yeah, slide is clear. You go ahead. दिख रही है सर? Yeah, दिख रही है. Okay. So I'll just take you quickly, but we'll stop at 1 or 2 very important slides. This is the artist's imagination of how it would have looked, and it is looking much better than this, actually. Some of the images. Mantriji made this entrance of the Shiva statue. It's much more graceful now when you climb up these stairs. These are the scanned images from Murtikar. Tekla. 3D scanning on site. You can see those voids and holes. Those were grouted and then anchoring was done. Foundation.
Some meetings in progress, and the steel structure now is going to come up. That, and you can see the RCC wall all around, that is hillock wall. Imagine the size. A person is standing by one finger of the foot. That is the size. That is dummy, thermocol dummy. Structural fabrication work. These are the internal steel columns being erected. The entire workshop. This is dummy, full scale, internal. Now we are going inside. Crescent moon structure, and this is trident top part. Nandi ji. Snake. You can see right leg, thumb. Entire steel structure has been covered with fire resistant material. Somewhere intumescent paint, somewhere cementitious vermiculite. 4 hours of fire rating. Bird's eye view. Some of the news. Trident structure being lifted and then erected. I'll show you one very good thing now. It's just painting. The external golden color which you see is nothing but the copper metallizing of 50 micron, which is being done over zinc phosphate. So after grinding the skin, there is a zinc phosphate coating primer, and over that 50 micron copper metallizing has been sprayed just to enhance the durability. This is the finished eye. Ear, Munish Nasaji is sitting in the ear, and Munish Nasa was the person who really got the work. I think your answer is already there in this one. Okay. One answer, number of question from SS Kotomble. I think they get answer about the 200 to 400 thickness of the wall to be made and erected there. About the foundation, many question was there, and I think answer already is there. Okay. One typical question from the Jiten Vyas. Kutumble sahab ne pucha how the concreting of skin shell was done. Yeah. No sir, not graniting. It was poured cast in situ. We used the glass fiber molds as the external formwork and ply as the internal formwork. And we poured the concrete. We had a batching plant on the site, and we did the cast in situ concrete. And one question from Jitendra Vyas. Plant Pratishit, no. This is not a religious state murti. See, this is a monument. It is not that means worshipping one. Okay, because there will be people coming in, they will be going in and all that. So this is not going to be an idol of temple. Raksha is asking which type of foundation. Madam, it is a raft foundation, complete. Raft in steps. There is a huge raft. One level, then there is thick raft in the lift core part. Temperature, Sham Burma. Temperature 250 is same, 0 to 50 degrees variation. Yeah. Thanks, JK Cement. You did wonderful by supporting this, and I'm really happy for you all. Any other question? Priya? Yeah, I think maximum question already answered during the presentation. Okay, Amitabh. Amitabh is leaving. He has to go back to the work. Okay. Amitabh, basically, he has a spare 1 hour from the office. Different time is there in the Canada, basically. How raft anchored in rock. Yeah. Raft is not anchored, but the anchors were 7 meters inside the rock and 1 meter in the raft. So in all 8. Do cantilever designed for 5 times forces? Yes, yes. All those provisions we used.
Yes, So sir. I think we should go further. Please. Yeah. So thanks a lot again. The next presentation is by JK Cement. JK Cement is supporting to conducting this type of the seminar, and always Pradum Sharma is our wonder boy. हम उसे wonder boy ही बोलते हैं कि कभी कोई चीज को बोलते हैं वो बोलता है 15 मिनट बस टाइम दो फिर मैं अरेंज करता हूँ और कभी भी ना नहीं मिलता. Thank you. Mr. Sakun Ved is there, All India Head Technical Services. I request him to present his presentation. Or Thank you, Paryaji. And it was a wonderful presentation by Dr. Abhay Gupta. A very good evening and welcome to all technocrats present on this forum. I do not have any presentation to share. It was just a Thanksgiving note on behalf of JK Cement. I thank you all technocrats for coming to this platform, and I also thank Association of Structural Engineers and Professor Dhawalkar Society of Engineering Trust for granting us this opportunity to share this platform. We at JK Cement have been very active during this challenging phase of a pandemic and lockdown. Another phase appears to be there staring at us. And the lockdown and pandemic has in fact taught us many lessons. And one important lesson is that you are not required to be physically present everywhere. Virtual medium and front was another very important platform which was discovered, rediscovered, I would say, during this time. During the past 1 year, we also conducted around 3,000 odd virtual events, tech talks involving all the stakeholders of the construction industry. Around 1.5 lakh people across the construction industry were witness to such tech talks. And in the end, not taking much time, we look forward for similar collaborations with the Association of Structural Engineers in the days to come. And thank you all for being a part of this wonderful presentation by Dr. Abhay Gupta. Thank you very much. सर इसमें एक रिक्वेस्ट भी है. परिहार साहब और अभय गुप्ता साहब बोल रहे थे, तो वी वुड लाइक टू हैव ए विजिट टू दिस स्टैच्यू as soon as the lockdown conditions improve. Yes, of course, this would आप बनाइए, program बनाइए and let me know. Nowadays it is going to be quite hot summer, so just be careful, and corona as well. Let things settle down and make a good program post rains. It will be very beautiful. In fact, sir, I have witnessed your project in Himachal, Solan, way back when I was a young engineer. So I used to visit that site, and incidentally, I was posted there only in Solan with the cement company only supplying cement. So as a technical service engineer, I used to visit the site. Thank you, sir. I can see Atul Shade sitting there and smiling, but not asking anything. No. You will get within the 2 or 3 minutes. We will just before concluding this session, there is one event, is the main event to inspire what are the young engineers is there. That is the gold medal presentation. So I will put it in this one. It is a very short presentation is there.
Yeah. The screen is visible? Yes. Yeah. So this is the 20th Professor Dhawlikar Memorial Lecture and Gold Medal Presentation. काफी पहले से 2002 के बाद में हमने यूं करा कि धवलीकर साहब के नाम पे एक हम गोल्ड मेडल करें. इसे एलएस वासवानी आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इसे सपोर्ट करा. और इस दौरान जो स्टूडेंट SGSITS श्री गोविंद राम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में पढ़ते हैं, एंड दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर द बी सिविल. व्हाट आर द person who got the maximum number in structural subject. And आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है. Yeah. स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है. Okay. First slide यहाँ आप जी. Yeah. तो subscribe of the who is the topper of the civil, and so first medal supported by the LS Vaswani Architect Private Limited, and in between after some time Madam Gupta, Uttamasha Gupta, he is a professor in GSITS. उन्होंने अपने फादर के और मदर के नाम पे एक नया गोल्ड मेडल दिया, क्योंकि he is the expert in the structural designing subject teaching. दूसरा गोल्ड मेडल जो दिया जाता है वो जो स्टूडेंट 4th ईयर फाइनल ईयर एट दैट टाइम बेसिकली, और नाउ इट इज 3rd ईयर एंड 4th ईयर, who score a maximum highest score in the structural engineering subject. पिछले साल कोविड में ये संभव नहीं हो पाया था कि हम देते, बट आज हम उन बच्चों को वही सम्मान दे रहे हैं और ये गोल्ड मेडल उनके यहाँ पहुंचाया जाएगा. आज डिजिटली हम उनको डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर. मुजफ्फर हुसैन Mansoori, he is residing in the Ratlam and he is civil engineering topper for the year 2009. I congratulate him. You have done a wonderful job and wonderful working in the future also. Amol Porwal, he is residing in the Neemach, highest score in the structural engineering subject for the year 2009. He is now facing some COVID problem. You will get well soon, and you will come out this pandemic problems. And the next is the highest score in the structural design subject for the year 2020, Sagar Gupta. Now he is residing in the Bhopal already. I congratulate too. And one our girl, that is the Nancy Raikwar, Bhopal, civil engineering topper for the year 2020. I congratulate all the 4 students. मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा कि ये अवार्ड ऐसा नहीं है कि किसी ने जीता है. ये उस चीज के इंस्पिरेशन के लिए है कि जिंदगी में ऐसे अवार्ड की तरफ हमारे मन में ललक होनी चाहिए ताकि हम अच्छे काम करें और उसका फल हमेशा मिलता ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि ये फल नहीं मिलेगा. ये तो केवल इंस्पायर करने और किसी की ताली या उस चीज को करने के लिए कभी कोई कम नहीं होता. बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे तो ऐसे अवार्ड हमें जिंदगी में मिलेंगे और शायद इसे देख के दूसरे लोग भी उत्साहित होंगे कि हमें ऐसे अवार्ड मिलते रहें, डिफरेंट तरफ मिलते रहें. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लिसनिंग. नाउ आई रिक्वेस्ट अतुल सेठ. अतुल सेठ इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन इन आवर एसोसिएशन. यदि हम धवलीकर साहब की बात करते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ के और इस नए नए मुद्दों को उठाना और उनका सॉल्यूशन करवा के ही रहना, ऐसे शख्स हैं हमारे अतुल सेठ. इंजीनियर्स हैं और हमेशा जैसे धवलीकर साहब बोलते थे कि हिंदी में बात करो, सीधी चीजें भेजे में घुसेंगी, मतलब ऐसा ही बोलते थे सारी चीजें. तो ऐसे शख्स से आज ये मुलाकात होगी और मैं चाहूंगा कि इस बारे में 2 शब्द हमारे साथ में JS जैन साहब हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, और उनको साथ में कंपनी देंगे अतुल सेठ जी. अतुल सेठ जी, इस बारे में आप कुछ 2 शब्द बोलें कि इस कैसा प्रोजेक्ट है, क्या है, आपकी फीलिंग क्या है. अपना माइक अनम्यूट करें. अभी अनम्यूट नहीं हुआ. नमस्कार. The host is not allowing me. अब हो गया. आवाज आ रही परिहार जी? या बिल्कुल क्लियर है. आपका हंसता और मुस्कुराता चेहरा हमें नजर आ रहा है. धन्यवाद परिहार जी. डॉक्टर अभय गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज जो आपने
एक नई टेक्नोलॉजी से परिचय कराया, या हम कहे कि यात्रा पे ले चले हमको। हमको ऐसा लग रहा था कि मूर्ति बनती जा रही है, हम उसके साथ घूमते जा रहे हैं। और आज के इस प्रस्तुतिकरण से मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में जब कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाया और जो एक अचंभे की स्थिति अर्जुन की बनी थी, कुछ वैसी स्थिति हम सबकी है आज कि दादा के शिष्य के द्वारा दादा से जो यात्रा शुरू करी 1976 में, और इस 44 साल की यात्रा में जिस ऊंचाई पे पहुंचे, 351 फीट की ऊंचाई पे जब उनका फोटो देखा हमने, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी श्रद्धांजलि दादा को डॉक्टर अभय गुप्ता के द्वारा रही कि इनने अथक प्रयासों से और एक बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों से, हम कहे कि हर छोटे कदम से ही बड़ी मंजिल पाई जाती है। ये मंजिल पाई है आपने, और जिसमें हम कह रहे हैं कि बहुत सी नई नई बातें, छोटी छोटी बातें हमको आज सीखने मिली है। इंदौर में हम बात करते हैं 10 दिन 15 दिन की क्यूरिंग की, वो भी आधे अधूरे की, और वहां पे 45 दिन की क्यूरिंग करना और उसका परिणाम की एक भी सिंकेज क्रैक सरफेस पे नहीं है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपने दिया, और ऐसे बहुत सारी चीजें आपने हमको सिखाई। हवा का प्रेशर की बात आपने करी, या गर्दन और त्रिशूल के बीच में जब हवा निकलेगी, तो जो चीज हम सोच नहीं पाते हैं उसको आपने करके, उसका एनालिसिस करके भगवान शिव की एक जो मूर्ति आपने स्थापित की है, मुझे लगता है कि ये सालों साल तक आज के इस लेक्चर को जिन जिन ने सुना है उनको प्रेरणा देता रहेगा कि कार्य को, बड़ा कार्य हो या छोटा कार्य हो, किस लगन से और किस निष्ठा से किया जाता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर अभय गुप्ता जी का जो प्रस्तुतिकरण है आज का, वो एक निष्ठा का और लगन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर एसोसिएशन के अंदर जितने भी हम लोग मेंबर हैं, हमने इससे प्रेरणा लेके हमारा जो भी काम है उसे इस मूर्ति की तरह ही चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, और छोटी छोटी बारीकियों को लगातार मिलके एक टीम वर्क के रूप में, जैसा हमने देखा कि थर्मोकोल से लेके कॉपर पेंटिंग तक की जो यात्रा रही, कितने लोगों का सहयोग लिया, कैसे टीम बनी, और जीवन भी मेरे को लगता है कि यही है। और इस कोरोना काल के अंदर जितनी अच्छी टीम रहेगी, जितना अच्छा हम काम करेंगे, मुझे लगता है कि सार्थकता रहेगी। दादा के इस दिन को याद करते हुए दादा को हम सब श्रद्धांजलि देते हैं, और अभय गुप्ता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। सो नाइस। बहुत खूबसूरत वर्ड आपने बड़े छोटे टाइम में कंक्लूड करे। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि भव्यता हमें सदैव आकर्षित करती है, और शायद इसलिए हमारा अहंकार के लिए आईना बन जाता है। हमें उस परम सत्ता की याद दिलाता है जिसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। दिव्य प्रेरणा से भव्य प्रतिमा, और भव्य प्रतिमा से दिव्यता के दर्शन आज आपने कराए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे जयेश जैन साहब हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ शब्द आपके द्वारा भी यहाँ पर प्रस्तुत करें। परिहार जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंटेशन था वो वैसे ही इतना अच्छा था कि उसमें शायद सभी लोगों की सारी जिज्ञासाएं शांत हुई होगी, और जो एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के हम सोचते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ इट, लेकिन जब आप एज ए होल किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं तो कितने एस्पेक्ट्स उसमें आते हैं, ये आज हमने महसूस किया होगा सब लोगों ने। और हर एस्पेक्ट को कितनी बारीकी से हमें देखना चाहिए, ये हमको अब महसूस करना होगा, क्योंकि आज के समय में हम लोग वास्तव में इंजीनियरिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमसे पीछे छूटते चले जा रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं एक बार सभी को पीछे से रिवाइज करके देखना होगा। हम लोगों ने शायद इंजीनियरिंग किए 30-30, 40-40 साल हो गए, और हम आज भी अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं रख पा रहे हैं, और ये हमें देखना होगा कि ये सारे एस्पेक्ट्स को और लगातार नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत रहेगी।
और उसके लिए हमारी जो एसोसिएशन की भूमिका है उसको हमें वापस से कुछ रिवाइज करके उस लेवल पे लाना पड़ेगा कि हम सब लोगों को अपडेटेड रख सकें। यही मेरा कहना है। बाकी तो सेठ साहब ने बहुत अच्छे से इसको पूरा समराइज कर दिया है और उससे ज्यादा कुछ कहने की मेरी इच्छा भी नहीं है अभी, क्योंकि इतने अच्छे समराइज करने के बाद मैं उसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आज मेरे को एक धवलीकर साहब याद आ रहे हैं, क्योंकि धवलीकर साहब एज ए गुरु थे और शायद कभी आते थे और बोलते थे कि ये कैलकुलेशन दिखाओ, शायद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात रात भर जगता था, वो कैलकुलेशन पूरा करता था और वो लेके जाते थे और कैसे वो देखते होंगे, कहते बहुत बढ़िया किया। तो वो जो एक प्यार था उनका और अच्छा बनने की एक सीख मिलती थी, उसका कोई सानी नहीं था। तो मैं तो यही कहूंगा कि महापुरुष अपने कार्यों से अमर हो जाते हैं और विचारधारा के रूप में हमेशा मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रोफेसर धवलीकर साहब ने हमें न केवल तकनीकी ज्ञान दिया, बल्कि इसका उपयोग और मानवता की सेवा कैसे करें ये भी सिखाया। इसका एक उदाहरण हमारे अभय गुप्ता जी हैं, हमारे अतुल सेठ हैं, हमारे जयेश जैन हैं, ऐसे कितने लोग हैं। आज इस सेमिनार में एक लंबी लिस्ट है। प्रेम कृष्णा जी की पूरी टीम जो मिराज ग्रुप की है, अनुराग जी हैं, मैं जरूर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इसे सुना। आज इस दौरान इतने बड़े संस्थान को अपने कंधों पे लेके चलना, उसकी गरिमा बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो आज मैं इस फोरम पे सबसे पहले धन्यवाद देता रहूंगा GSITS के हमारे डायरेक्टर राकेश सक्सेना जी को। इसी दिन उन्होंने इस तरह का पद ग्रहण करा था पहली बार एज ए डायरेक्टर, और आज उनके 5 साल हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा राकेश सक्सेना जी को एक बार तालियों से स्वागत करें और वो आए और हमारे लिए कुछ उद्बोधन और कुछ शब्द यहाँ पर प्रस्तुत करें। राकेश सक्सेना जी। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। हो गई। अनम्यूट है आप? हो गया। जी सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? या वेरी क्लियर। सभी को नमस्कार। मैं आज बड़ा अभिभूत हूँ। आज इस पूरे लेक्चर को मैंने सुना। सबसे पहले तो मैं धौलीकर सर को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ करके गए हैं कि सभी टेक्नोक्रेट्स पूरे विश्व के जुड़े हुए हैं, खासकर सिविल इंजीनियर जो उनके स्टूडेंट्स हैं, और आज भी अब उनको हर साल एक टेक्निकल लेक्चर के रूप में याद करते रहते हैं। तो मैं सर को नमन करूंगा और सर को प्रणाम करता हूं। और आप लोगों को उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग बताई, लेकिन मैं जब 84 में पहली बार कॉलेज आया था ME ज्वाइन करने, तो मैं सर के घर गया था। सर मुझको घर ले गए थे, ध्यान नहीं आ रहा क्यों गया था। सर ने मुझको 2 चीज बताई थी। एक तो समय का महत्व क्या होता है, ये उन्होंने जीवन में समझाया, और दूसरा सर ने मेरे को एक बात बताई थी कि मैं हमेशा पेड़ पौधों से और फूलों से बातें करता हूँ। तो ये चीज शायद सबको मालूम नहीं हो, लेकिन मैं आज भी पेड़ पौधों और फूलों से बात करता हूँ। सर की दी हुई सीख मेरे पास आज भी है, और समय के महत्व को काफी मैं जानता हूँ। तो मैं नमन करता हूँ धौलीकर सर जी के इस आज के 20वें लेक्चर के लिए। दूसरा, मैं हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे 4 स्टूडेंट्स जिनको छात्र और छात्राएं जिनको आज पुरस्कार मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे संस्थान के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करी और आज ये मेडल जीता, और वो आगे भी इस हमारे नाम को जीवित रखेंगे और बड़े अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा हमारे गुप्ता जी को। गुप्ता जी हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन आज का उनका लेक्चर इतना अच्छा था कि मैंने पूरा लेक्चर सुना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते भी मुझको इस लेक्चर में बहुत कुछ समझ में आया और बहुत मजा आया। तो गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो एक्सप्लेनेशन था आपका, वो इतना अच्छा था कि बहुत ही बाखूबी से आपने सबको अपने लेक्चर के बारे में समझाया। परिहार जी, शाह साहब, उनकी पूरी टीम, सभी एसोसिएशंस जो लोग इस आज के धौलीकर जी के लेक्चर में इन्वॉल्व थे, JK सीमेंट, और हमारे जैन साहब और सेठ साहब ने भी जो उद्घोषण दिया, उन सब के लिए भी मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, सबको बधाई देना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि संस्थान में ये लेक्चर
इस तरह के लेक्चर होते रहें और इस तरह की नॉलेज लोगों को मिलती रहे। बल्कि मैं चाहूंगा कि सिविल के अलावा और बाकी ब्रांच में भी यहाँ पर लेक्चर इसी तरह का होता रहे और टेक्निकल अपलिफ्टमेंट बच्चों का और सभी का होता रहे, विश्व में सब चीज बढ़ती रहे। इसी आशा के साथ मैं फिर से पुनः आप सबको, पूरे ऑर्गेनाइजर्स को, पूरी टीम को, सबको बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी को पुनः मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मैं यहाँ पर अब हमारी एक वेल आ गई है कि कहीं इसको बाइंड अप करा जाए या क्लोज करा जाए या शुभ संध्या पे अब शुभ रात्रि बोला जाए। बट इससे पहले ये मेरी ड्यूटी बनती है कि इतने बड़े प्रोग्राम्स को करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और इस दौरान हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स के मेंबर्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ वेलुअर, डिपार्टमेंट ऑफ द सिविल इंजीनियर एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, इंडियन जियोटेक्निकल सोसाइटी, मराठी इंजीनियर्स, एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, WRS वाटर रिसोर्स सोसाइटी स्टूडेंट चैप्टर, और इस तारतम्य में इसरे एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर को सीखने पड़ती हैं। तो ये भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। इनके पदाधिकारियों और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें इस विधा में भी पारंगत करा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग जो विधा है वो कोई बहुत छोटी विधा नहीं है, बहुत बड़ी विधा है। सिविल को यूं बोला जाए तो जब तक सिविलाइजेशन रहेगा तब तक ये इंजीनियरिंग हमें करते रहना पड़ेगा। यदि आप एक स्टूल में बैठे हैं तो वो भी स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की देन है। जिस फर्श में खड़े हैं, जिस रोड में चल रहे हैं, स्मूथली चल रहे हैं, वो सिविल इंजीनियर्स की देन है। तो मैं सभी एसोसिएशन और उनके पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के कार्यक्रम में अभय गुप्ता जी को मैं कैसे धन्यवाद करूं और किस तरह से करूं ये मेरे को समझ नहीं आता। बस 2 शब्दों में मैं कह सकता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं और हमें ये प्राउड फील कराए। डॉक्टर प्रेम कृष्णा जी, जिनके नाम सुन से अच्छा लगता है, जिनको हमने यहाँ पर इनवाइट भी करा था और कुछ लेक्चर्स भी हमने सुने थे। वंडरफुल पर्सन, बहुत ही श्रद्धेय गुरु को मैं नमन करूंगा। ओपी भाटिया साहब, बहुत सारे मेरे सीनियर पर्सन, एसोसिएशन के मेंबर, जो मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और हमेशा कहते हैं दौड़ो और भागो, इसके पहले जिंदगी नहीं है, लाइफ है, उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करो। रियली मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मिराज ग्रुप से हमारे राजेश जी, मेहता जी, संजीव अर्गल साहब, पालीवाल जी, नरेश कुमार जो स्कल्पटिस्ट हैं, अनुराग मेहता जी सायपुर पालन जी से बिलोंग करते हैं, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने इस तरह से हमें रूबरू कराया यहाँ। वंदना वर्मा, मैं दिल्ली में कभी भी मिला हूँ इनसे, एंड ही इज फ्रॉम GSITS, वंडरफुल पर्सन। Thank you for organizing this seminar and supporting and making a good structures. Raksha Rahul Matthew ji, I think he was the concrete specialist in that area. इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने कुछ शॉर्ट टाइम में ही नोटिस पे दिया और सकुन वैद्य साहब ने इसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा और हमसे एक अच्छी तरह से जुड़े। आने वाले टाइम में हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ में बहुत सारे सेमिनार करेंगे। ये एक्सचेंज प्रोग्राम है हमेशा एक दूसरे के लिए। सीमेंट्स का मतलब ही होता है कि एक दूसरे से जुड़ना, बहुत अच्छी से चिपक के रहना। फिर क्योर यदि हो जाए हाँ तो फिर तो लॉन्ग लाइफ ही हमें मिलना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। एंड प्रदुम, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। थैंक्स अ लॉट। अभी जो आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं ये YouTube पे डायरेक्ट स्ट्रीमिंग भी हो रहा था, जो मैं बताना भूल गया था। बहुत सारे लोग YouTube पे हैं, दे आर गेटिंग ए गुड व्यू एंड वेरी क्लियर। दिस इज डन बाय द विवेक तिवारी। विवेक तिवारी इज a young associate professor in GSITS and always insist कि सर मेरे को कोई काम बताओ। मतलब कितने डाउन टू अर्थ हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड I will extend my thanks to my team. What are the managing committee team? Kutumble sahab, H.I. Mehta sahab, Deepak Sai sahab, and number of persons, Hare sahab. Everyone always inspiring me कि बताओ क्या काम करना है। कई बार बोलते हैं you are a one man army. मैंने कहा आर्मी नहीं है, आपके सपोर्ट है हाँ तो आर्मी तो बन के रहेंगे, सीधी सी बात है। Thanks a lot. Thank you very much. And who are the watching in this webinar?
सभी लोगों को जिन्होंने बड़े पेशेंसली इस वेबिनार को सुना और आपने अपने कमेंट्स भी इसमें पोस्ट करे। हम चाहेंगे कि हमारे एसोसिएशन से आप लोग एसोसिएट हों और कहीं ना कहीं चीजें हमें जिंदगी में सीखने को मिलती हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम्स के बाद में जैसी हमारी एक परंपरा है कि हम सरस्वती वंदना से शुरुआत करते हैं और राष्ट्रीय गान से हम इसका एक भजन करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी जगह पे खड़े होके और इस राष्ट्रीय गान को सुने।